cars, कार spaceships. बनाया, स्पेसशिप बनाया. Another thing we have like God is we're moral. We know right and wrong. हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है. And then the third thing that we have is we're social. और हम सोशल मतलब हम God likes relationship. परमेश्वर को रिश्ते पसंद है. Father, the Son, and the Holy Spirit love each other. पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक दूसरे से प्रेम So करते we हैं. also have that. We need those things. और हमें भी उन चीज़ों की ज़रूरत है. So there's a lovely part in the end of the Gospels. गॉस्पेल की किताबों में एक आखिरी में एक अच्छा संदेश है. John 21. यूहन्ना 21 में What happens is then Peter denied Jesus 3 times. पतरस जो है वो यीशु का 3 बार And इनकार he's the करता है. leader. और वो एक लीडर है. And he's very ashamed. वो बहुत शर्मिंदा है. And he's also, can he still be the leader? अब वो सोचता है कि वो अभी भी एक अगुवा हो सकता है. And instead of having like a big council meeting, instead of like a big committee meeting, एक बड़ी सभा के एक बड़ी सभा होने से he didn't have a committee meeting to restore Peter. उसके पास एक बड़ी सभा नहीं थी जिसमें वो खुद को रिस्टोर कर सके. But he had instead, he just met them on the beach. सिर्फ वो उनको बीच पे मिला. He would make breakfast, fish, यीशु ने उनके लिए फिश बनाया, मछली बनाया, bread, ब्रेड दिया and they had breakfast together. और उन्हें साथ में ब्रेकफास्ट किया. And then afterwards he took Peter and walked down the beach with him. पतरस उनके साथ बीच पे चला. And then he just asked him, Peter, do you love me? अंदर वो पतरस को पूछते कि पतरस तू मुझसे प्रेम करता So है. it was just relation. He just restored the friendship. परमेश्वर ने उस रिश्ते को फिर से रिस्टोर किया. He never asked him, many questions. And that was it. Very simple. परमेश्वर ने बहुत सारे सवाल नहीं पूछे, सिर्फ उस रिश्ते को उन्होंने रिस्टोर किया. So in the Gospels, there's 2 words for friendship. गॉस्पेल की किताब में हम दो चीजों को देखेंगे. One of them means you join together with someone because you have a common purpose. आप एक दूसरे के साथ मिलना एक मकसद के लिए. It's used for business. वो एक बिजनेस के लिए हो सकता Join है. together to make a business and make money together. जैसे हम एक बिजनेस 2 जन साथ में आके करते हैं और साथ में पैसे You बनाते might हैं. have a traveling compound. Well, hey, I have to go to Mumbai. We want to travel together. अगर मुझे मुंबई जाना है तो मैं किसी के साथ में जाऊँ. And it's good. और ये अच्छा है. But the other one is you're together because you look for the best for the other person. और एक रीजन ये हो सकता है कि आप दूसरे के साथ हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा है. How can I make your life better? कि मैं अपना जीवन How कैसे can अच्छा I बना help सकता you हूँ. do better in life? क्या मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा कर सकता So हूँ. in 1 Corinthians it says, love doesn't seek its own benefit. प्रेम अपनी अच्छाई नहीं देखता. And then Paul says, I don't have anybody like Timothy. पौलुस कहता है कि मेरे पास तिमोथी जैसा कोई नहीं है. He naturally cares for what's best for you. वो ऐसे ही केयर करता है कि जो उसके लिए अच्छा है. All the others are seeking, how can I build my ministry? That's what they're thinking about. दूसरे लोग सोचते हैं कि मैं अपनी मिनिस्ट्री को कैसे बनाऊं. But Timothy's thinking, how can I help these people? लेकिन तिमोथी सोचता है कि मैं इन लोगों की मदद He कैसे says, I करूं. don't have anyone else like that kind of thinking. मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ऐसी सोच हो. But that kind of heart. ऐसा दिल नहीं है किसी के पास. And then it says of Nehemiah, it says, his enemy said this about him. नehemiah में कहता है उसके शत्रुओं ने ऐसा कहा. A man has come who seeks the welfare of these people. एक इंसान आया है जो लोगों की अच्छाई देखता है. They knew Nehemiah didn't come there to say, how can I make myself rich, famous? नehemiah ने ऐसे नहीं सोचा कि मैं अपने आप को अमीर कैसे बनाऊं. So this man has come here because he seeks the welfare of these people. बट उस लोगों ने सोचा कि वो यहाँ पे इसीलिए आए क्योंकि वो लोगों की भलाई सोचता था. So that's the kind of, that friendship is a kind of, the word is philios. उस वर्ड का नाम है फिलियोस और उस तरीके की दोस्ती होना चाहिए. Seeking the good of the other person. दूसरों की अच्छाई को देखना. And the other one is okay as well. It's like we're on a mission together.
और दूसरा ऐसा है कि हम एक मिशन में साथ maybe में it's हैं, business, बिजनेस हो सकता but है, it can happen in ministry. मिनिस्ट्री में भी ये चीज़ हो सकती We're है on a mission for God, कि हम गॉड के लिए, परमेश्वर के लिए मिशन के ओर है, and it's good और ये अच्छा to है help each other. एक दूसरे की मदद करना। There was one man, he says 7 years he was in ministry, एक इंसान था जो 7 साल मिनिस्ट्री में था, and they were going around different places ministering. वो अलग अलग जगह पे जाके मिनिस्ट्री कर रहा था, And he said at the end of 7 years, और उसने कहा कि 7 साल के he बाद said I was empty. कि मैं खाली था, And I looked at the other people that were with, and they were empty. और मैंने दूसरे लोगों की तरफ देखा, वो भी खाली थे, उनके अंदर कुछ नहीं था। It's not, he wasn't saying they don't care about me, he said, but he was saying that we were just on a purpose together. वो कह रहे थे ऐसा नहीं कि कोई भी बात नहीं है, लेकिन हम एक मकसद के लिए साथ में But थे, the relationship kind of didn't happen. बट वो उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं था। And so in friendship, दोस्ती, in the Proverbs it talks a lot about friendship. नीति वचन में दोस्ती के बारे में काफी बार कहा And the गया है, first thing it says about it is it's consistent. बने रहना, A friend loves all the time. दोस्त हमेशा प्रेम करता है, That means, so and then it says, if there's a friend who sticks closer than a brother. और यहाँ ऐसे भी लिखा है कि एक दोस्त है जो हमारे पास हमेशा रहता And है। then it says, don't forsake your friend or your father's friend. अपने फ्रेंड को और अपने पिता के फ्रेंड को कभी मत छोड़ो। So it says, remember the prodigal son? आपको याद है उड़ाऊ पुत्र? That I was all in money. उसके पास बहुत पैसा I था, don't know how much, but I think he had 10, 20, 30 lakh. मुझे नहीं पता कितना, लेकिन शायद 10-20 लाख होगा। And he had a lot of friends. उसके बहुत सारे मित्र थे, His money went, उसका पैसा गया, his friends went. उसके फ्रेंड्स भी गए। Gone. Run Some off with get. friends. And then he's in difficult. So, you know, it says, many seek the favor of a rich person. बहुत सारे लोग अमीर व्यक्तियों का फेवर ढूंढते हैं, And also of a leader. और एक अगुए का भी फेवर ढूंढते But हैं। they may only be looking for position or influence or money. शायद वो पैसे के लिए या पोजीशन के लिए So ढूंढते it's हैं। hard. It's a difficult thing. ये कठिन है। Okay, so the first one is a real friend stays constant. एक सच्चा मित्र हमारे साथ सदा बना रहता है, They're direct. वो हमें रास्ता दिखाते हैं, They tell you when something's wrong. वो बताते हैं जब हम गलत होते हैं। Faithful are the wounds of a friend. एक मित्र के द्वारा दिए हुए शब्द, And the kisses of an enemy are deceitful. एक मित्र के द्वारा दिए हुए जख्म ठीक है, लेकिन एक शत्रु के द्वारा दिए हुए। Years ago, I was in this church with wrong teaching. मैं बहुत साल पहले एक चर्च में था जहाँ पे गलत शिक्षा थी। We were the hyper spiritual, super हम spiritual. बहुत ज़्यादा आत्मिक थे। Oh, the whole show. Whole show. And सब दिखावा था वहाँ पे। but my brother came to me and says, मेरे भाई ने मुझसे आके कहा, "You're an idiot. आप पागल हो, You're just proud and stupid." आप पागल हो। And he was right. और वो सही था। But I thought, when you're a spiritual man, it's that. I thought that when he's spiritual, he'll understand how big I am. और मैंने कहा कि जब आप आत्मिक होगे तब आप समझोगे मैं कितना But he बड़ा was हूँ। faithful to tell me, you're just being proud. और वो विश्वास योग्य था, और उसने मुझसे कहा कि आप घमंडी हो। So a friend is like that. एक दोस्त वैसा होता है। And then just a couple more things. Another one is they're careful with the friendship. हमें दोस्तों के साथ केयरफुल रहना है, You're not too familiar. उनसे बहुत फेमिलियर नहीं होना है। But you have to, your friend, even though he's your friend, has boundaries. उनकी एक सीमा होती है। The proverb says, don't be at your friend's door every day or he gets sick of you. हमें हमेशा बार बार अपने दोस्तों के घर नहीं जाना चाहिए। Like this, yeah, there is some every day, but there's some you have to say, he's got boundaries too. हर एक चीज़ की एक सीमा होती Even है। though it's my friend, I can't take advantage of the friendship. हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। And then you can't force the friendship.
और हम दोस्ती को फोर्स Above. दबाव में नहीं डाल सकते। So, and then the next one is counsel, good advice. एक अच्छा It says that सलाहकार the hearty advice cheers the heart. दिल से दी हुई सलाह हमारे दिल को आनंद से भर देती है। You get a real heart-to-heart एक conversation with someone, and it really strengthens you. जब हम अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करते हैं तो कैसे हमें उत्साह फील होता है, उत्साह लगता Jonathan है। strengthened David in the Lord. योनाथन ने दाऊद को परमेश्वर में उत्तेजित किया। And then it says Himraj had the t-shirt. Did you see his t-shirt yesterday? आपने हिमराज भाई की टी-शर्ट देखा था? Iron sharpens iron. So लोहा does लोहे को मजबूत one करता man है sharpen his friend. और एक दोस्त अब एक दूसरे दोस्त को उत्साहित So करता that है। means there's a little bit friction. There's a little bit of clash. सो झगड़े भी हो सकते हैं, टकराव भी हो सकता है, Some sparks. कुछ जलेगा भी। That you have to be able to have a little bit of a strong conversation. कुछ स्ट्रॉन्ग बातें भी Not होंगी, in a bad way, but in a kind of a little bit. गलत तरीके में नहीं बट अच्छे इस तरह, So because your personalities maybe are different. क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अलग अलग होगी And it's okay. And you have a different view. और आपका देखने का तरीका You don't अलग have to होगा। have the same view on everything. You can have a little different view. हम सबका तरीका देखने का But एक नहीं होता that's good because maybe your view is wrong. और ये अच्छा है, शायद हमारा or तरीका अलग हो it's half right and he has put some of the edges off. और शायद हम आधे सही हो और उसने फिर आधी चीजों Okay, को निकाल दिया हो। then the next one is vulnerable. It's kind of it is a little exposed. It's kind of you show your weakness. कि आप अपनी कमजोरी एक दूसरे को दिखाते हैं। Like what happens to people is you get close to somebody आप एक दूसरे के करीब आते हैं and they betray you. और वो आपको धोखा देते हैं I'm never ever going to trust anyone again. और उसके बाद हम किसी पे भरोसा नहीं करते, But you have to trust them. बट आपको फिर से भरोसा करना होगा। And like the people who can hurt us, only people who are close to you can really hurt you. आपको वही इंसान दुख दे सकता है जो आपके करीबी वाला हो। When the chai wala and the rickshaw wala insult you, you're like, so what? So it doesn't bother you. If the chai wala and the rickshaw wala, if they insult you, अगर कोई चाय वाला या फिर रिक्शा वाला हमें कुछ गलत बोल देता है it doesn't bother you. Okay, I तो wish हमें you उससे didn't. फर्क नहीं पड़ता है। But if someone your close friend and someone very close to you, they can hurt. लेकिन अगर कोई हमारा जो हमारी और गहरी ऐसे- रिश्ता हो जिससे वो हमें दुख दे तो हमें दुख होता है। Tell your secrets. और हम जिसे अपने सीक्रेट्स बताते हैं, Not only tell your secrets, make up ones. Invent secrets. Tell lies. और वो कोई झूठ बोलते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, So नई नई बातें बनाते हैं। that's you know. So it says in Psalm 55. वजन से We ate bread together. हमने साथ में रोटी खाई, We walked to the हम house of साथ God में together. चले। If it was an enemy, I could have taken it. अगर वो कोई शत्रु होता तो मैं उससे But नहीं it was लेता, you, my close friend, बट आप मेरे गहरे मित्र थे, and this really hurt me. इसीलिए हमें दुख होता And है। this, of course, happened to Jesus also. यीशु मसीह के साथ भी वही हुआ। Which was so there can be sometimes then you go, I never want to trust anyone again. ऐसा भी हो सकता है कि हम सोचे कभी कि हम वापस किसी पे भरोसा नहीं I'm करेंगे, never going to get close to someone मैं again. किसी से कभी भी गहरी रिश्ता नहीं You रखूंगा, have to trust them. बट हमें वो एक And दूसरे पे भरोसा especially रखना if होगा। you're in the church ministry. और स्पेशली जब आप मिनिस्ट्री में हैं तो आपको एक दूसरे पे भरोसा रखना होगा। The nature of it is you kind of open your heart somewhat. आपका स्वभाव ऐसा होगा कि आप अपने दिल खोल के किसी And से you बातें open करेंगे, your life. आप अपना जीवन उनके सामने And you खोल open देंगे, your home often. आप अपना घर उनके Your लिए family खोलेंगे, is everything's there. आपकी फैमिली भी With उनके लिए, boundaries. With boundaries. लेकिन एक उसकी एक सीमा But होती you है। can't लेकिन आप completely, and then so you say, I don't want to do that again.
फिर आप सोचेंगे मुझे ये वापस नहीं करना है, but you have to do it again. बट आपको फिर से करना But होगा। hopefully with a little more wisdom than the last time. लेकिन इस बार आप और ज्ञान अच्छे सोच के करेंगे। So why, like I'm saying, and you know, it's great to have purpose एक मकसद होना ज़रूरी है and a mission. और मिशन। You know, it's a wonderful mission we have. Go into all the world, preach the gospel. पूरी दुनिया में जाना और सुसमाचार सुनाना एक अच्छा मिशन है। Raise up disciples. नए चेलों को बनाना Gives you energy. आपको वो एनर्जी देता We're है made to have purpose. कि हम एक मकसद के लिए बनाए गए हैं, But we're made to have friendship, लेकिन हम दोस्ती के लिए भी बनाए गए हैं। belonging, एक दूसरे के साथ रहना, and love. एक दूसरे से प्रेम And करना, what can happen is the purpose is everything. और मकसद सब कुछ होता है। But the nurturing of friendships. एक दूसरे को It's बढ़ाना। like, it can happen that if you're getting in the way of the purpose, अगर आप मकसद के बीच में आ गए तो they throw you away. मैं आपको दूर फेंक दूंगा। Alright, I don't care how much I hurt you. We're on a mission. जब हम मिशन के लिए जाते हैं तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर किसी को But it दुख can't हो रहा be हो like उससे। our mission is only to love. हमारा So, मिशन है कि is लोगों से प्रेम करना। Okay, last meeting. आखिर में Friendship. It says of Titus, one brother Philemon, he refreshes the inner heart of the saints. दोस्ती जो है वो हमारे अंदर के दिल को रिफ्रेश करती है। Like, it's great to get encouragement. Good to see you. Praise the Lord. अच्छा है एक दूसरे को उत्साहित करना, It's enjoyable. हमें अच्छा लगता है वो। But this he refreshes the deep heart of the saints. पर दोस्ती हमारे That's- अंदर से that's- दिलों को बढ़ाती है, उत्तेजित करती है। And then Titus, Paul says, I was greatly encouraged by the coming of Titus. तीतुस की किताब में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं तीतुस के आने से काफी उत्साहित हुआ। And then, of course, we have blind spots. हम सबके पास ब्लाइंड स्पॉट And होते हैं। Nathan came to David and said, David, नाथान नबी दाऊद के पास आता you're है living wrong. कि तुम गलत जीवन जी रहे हो, He was in adultery with Bathsheba. तुमने व्यभिचार किया है बत्सिबा के साथ। And then one more is Barnabas was Paul's friend. बारनबास पौलुस का दोस्त था। And Barnabas was a chief leader in the church. बारनबास एक ऊंची पोजीशन पे था चर्च में, लीडर था। Paul was, who's that? Who's it? Outsider. पॉल एक बाहर का इंसान था And they didn't trust him और वो उन पे भरोसा नहीं रखते थे because he persecuted the church. क्योंकि उसने चर्च को सताव किया था। So he was for a few years out in Tarsus alone. तो वो तार्शिश में कुछ साल अकेले था। And Barnabas, in the beginning, he's the one who says, no, this Paul, you can trust him. He's a real believer. बारनबास ने फिर लोगों से कहा कि आप पौलुस पे भरोसा रख सकते हो, वो एक सच्चा विश्वासी And है। then when he was on his own, और जब वो फिर खुद Barnabas से says, Paul will be of good help. Come to Antioch. तो वो बारनबास पौलुस को बोलते हैं Well, कि वो Barnabas अच्छी he मददगार was होगा। the head guy in Antioch. बारनबास एंटियोख में And एक Paul was लीडर था। helping. पॉल जस्ट उनको मदद करता था। And पौलुस Paul started going up. पौलुस धीरे And धीरे the उनके devil with साथ Barnabas. बारनबास के They साथ went on the mission field. मिशन फील्ड में गया। Paul just kept going up. पॉल ऊपर ऊपर जाते गया। Hey, get down here. नीचे आ जाओ। He didn't mind. Barnabas didn't mind Paul going past him. बारनबास ने नहीं सोचा कि पौलुस उससे ऊपर जा रहा है। He just recognized he has different gifts, different ministry. उसने समझा कि उसके पास अलग तरीके के गिफ्ट्स है, अलग मिनिस्ट्री है And he was happy. और वो to खुश see- था। to see him. So these are the last kind of things. Someone to be. One thing about friendship is the confidence, हमें दोस्ती में एक कॉन्फिडेंस होता है, confidentiality. एक कॉन्फिडेंशियलिटी, Keep the secret. रहस्य रखने वाला एक दोस्त होता है। Because you sometimes talking, you know the way it is. You have to just get it out. कभी-कभी हमें उन चीजों को बाहर निकालना होता है। So you have to know what I say
doesn't come out somewhere else. तो हमें उन पे भरोसा होना चाहिए कि वो चीज़ें किसी और को नहीं बताएंगे। And it's good to have that इस confidentiality. तरीके से दोस्त होना जो रह से रह सके अच्छा है। And why? Because the burdens get a little heavy, क्योंकि कभी-कभी बोझ हैवी हो so जाते you हैं, want to share it with someone. तो हम वो बोझ को किसी के साथ बांटते हैं, But you can't say it with everybody. बट आप वो सबसे नहीं बांट सकते। Ah, I thought you could handle problems. I thought you were the leader. I thought you're supposed to be the leader. हमें ऐसा लगा कि आपको सिर्फ अगुवे से बात करनी चाहिए। So you can't say everything. हम हर चीज़ें अगुवे से नहीं कह सकते। So and then the next one is that people have insights, लोगों के पास एक wisdom. ज्ञान होता है They kind of say you should do it this way, कि आप इस तरीके से इस चीज़ को or they कीजिए, can tell us, no, you need to calm down. और वो ऐसे कह सकते You're नहीं taking आपको it धीरे होना you're है taking it too serious. कि आप इसको बहुत सीरियसली ले रहे हो। You're taking, it's not, just let it go. It's not a big thing. उसे जाने दीजिए, वो बड़ी बात नहीं है। We lose that sense of proportion. कभी-कभी हम उस चीज़ को सोचना मतलब उस चीज़ को बड़ा कर देते हैं। And then so a trusted friend is good. दोस्तों पे भरोसा करना अच्छा है। And then maybe I think we're almost. Love covers it, doesn't tell anybody. प्रेम चीज़ों को छुपा के रखता है, वो सब चीज़ें सबको नहीं बताता। And so that's kind of what I want to say. यही मुझे कहना था। They say the two needs of people लोगों की दो ज़रूरतें are to feel I have a purpose. कि मेरा एक मकसद है, I'm significant. I have a purpose in life. कि मेरे ज़िंदगी में एक मकसद Something है, important that I'm part of. कि मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ का And हिस्सा हूँ। the gospel is the greatest purpose. और गॉस्पेल जो है वो एक मकसद है, But we also have a need to be loved. बट हमारी ज़रूरत है प्रेम करने की, Belong. कि हम एक जगह पे बिलोंग करते हैं। And see, some people go all for the purpose. कुछ लोग सिर्फ मकसद के पीछे जाते हैं We're on a mission from God. कि हम परमेश्वर के लिए मिशन पे हैं, And it doesn't matter how I treat people as long as I get the mission done. और इससे फर्क नहीं पड़ता मैं लोगों के साथ कैसा व्यवहार करूं, लेकिन मिशन कंप्लीट होना चाहिए। But to be able to also love and be loved by people. बट हमें लोगों को प्रेम करना है और लोगों से प्रेम चाहिए। And actually, over the years, it's the friendships that are going to matter. जब हम आगे के सालों में देखेंगे तो दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, The people you can trust. और जिन लोगों पे हम भरोसा कर People सकें। that this person just wants what's best for me. और ऐसे दोस्त होना चाहिए जो सिर्फ हमारे लिए अच्छा सोचे कि ये अच्छा है There's not हमारे that लिए। many of those people. बहुत सारे ऐसे So नहीं we have होंगे। when we get them, we have to grow them and keep them. सो जब हम बढ़ेंगे तो हमें ऐसा देखना है कि कौन हमारे सच्चे दोस्त है जिनके साथ हम And ग्रो कर सकें। and one other thing is when people come to the church, they recognize that. जब लोग कलीसिया आते हैं तो वो समझ Well, पाते they हैं इन like चीज़ों को, They like being in that around those type of तो people. वो उन लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं। So